morning to everyone. Now today is mock test number 7, chemistry paper explanation, section A. अच्छा, monomer of nylon 6. अच्छा, nylon 6 monomer is nothing but caprolactam. Caprolic acid है, caprolactam होता है. अच्छा, caprolactam direct formula based question है caprolactam. अच्छा, ये caprolic acid है. CH2 taken 5 times, NH2 COOH. This is called caprolic acid. Caprolactic acid. Caprolactam means amide है. CW1 NH is amide है. Cyclic compound होता है. Like cyclic compound होता है. Amide होता है. So monomer of nylon 6 is caprolactam is this one. The following equilibrium are given. The following equilibrium are given. This is an equilibrium constant for this reaction is. Equilibrium constant for this reaction is. Acha, this is required equation. From 1 and 2 I will get required equation. From 1 and 2 I will get required equation. Here required equation में 2 moles है. एक काम करो, यहाँ 2 से multiply करो, 2, यहाँ 2, यहाँ 2. Whenever 2 से multiply करो, then it becomes K1 square होता है. Whenever multiply with 2, K1 square. Divide by 2 under root K1. Reciprocal reverse करेगा, reciprocal होता है. And H2 acid you have to write it. Here also 2 now. Now after that you can add both this. We can get this only 2CO, H2H2 cancel है. अच्छा, H2H2 cancel है. O2 to OCO2. मतलब we are adding first equation, second equation. Adding is nothing but multiplication only. K1 square into K2. Whenever in ionic equilibrium we are adding 2 equations, मतलब you are multiplying with 2 equations only. So that means K1 square into K2. ये fourth option. अच्छा, first equation 2 से multiply करो, then equilibrium constant K1 square है. Then second equation as is, there is no change है. Then after that both equation you can add it. Adding means multiplying. अच्छा, very simple question है, logical question है. Whenever 10 power minus molar NaOH solution diluted to 1000 times, it become 10 power minus 8 molar NaOH. अच्छा, 10 power minus 8 molar का suppose pOH calculate करेगा तो 8 है, pH is equal to 6 है, which is not permissible है, which is not permissible है. Reason is base के लिए pH is greater than 7 होना चाहिए. Here pH is less than 7 is not permissible. That means so this method also we discussed previously. Now this is in between 7 and 8 होना चाहिए. In between 7 and 8 होना चाहिए. Are you remember that? कैसा करना? अच्छा, given OH minus is 10 power minus 8 है. In aqueous solution water में OH minus ion is 10 power minus 7 है. Total OH minus is nothing but 10 power minus 8 plus 10 power minus 7 है. 10 power minus 7 common इससे 0.1 plus 1 है. 1.1 into 10 power minus 7 है. अच्छा, pOH is equal to negative logarithm of this nothing but 7 minus log 1.1, 6.96 है approximately. But pH is equal to 14 minus 6.96 है, which is equal to 7.04. So in between 7 and 8. Logical question है. No need to do all this one. Logical question है. Simple logical question. 54. अच्छा, 1 mole of a perfect gas expanded reversibly isothermally to 10 times of its original volume. The change in entropy. अच्छा, change in entropy का formula है. Change in entropy का formula है. Delta S is equal to 2.303 NR. There is no T. Log V2 by V1. अच्छा, number of moles are given 1 mole है. So 2.303 R log 10 times 10 by 1 है. Log 10 base 1 is answer is nothing but 2.303 R. Next. अच्छा, question number 55. Which of the true for combustion of benzoic acid? अच्छा, for a kind of information, benzoic acid is solid only. C6H5 COOH plus O2
Q's raised to अच्छा CO2 plus H2. अच्छा balance करो equation. Here how many carbons are there? 6 plus 1, 7 carbons are there. Multiply with 7. देखो how many hydrogens are there? Here 6 है. H3H2. Now 7 into 2 14 है. 14 plus 3 17 है. 17 है. अच्छा ये 15 by 2 होना चाहिए. 15 plus 2 17 है. अच्छा ये solid है. At room temperature is liquid है. These two are gas है. मतलब delta n is equal to 7 minus 15 by 2. अच्छा minus half negative है. Whenever delta n is negative, we know for relation है delta h is equal to delta u or nothing but delta e plus delta n आती है. This value negative का मतलब है delta u is greater than delta h. Negative है. Delta n is negative मतलब delta u is greater than delta h. Very simple question. 55 question. 56 देखो. अच्छा ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ अमोनियम नाइट्रेट है देखो. NH4 प्लस है NO3 माइनस. यहां देखो x प्लस 4 इज इक्वल टू प्लस 1, x इज इक्वल टू माइनस 3. यहां देखो x माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 1, x इज इक्वल टू प्लस 5. मतलब माइनस 3 एंड प्लस 5. Now 57. Boiling point of an isotropic mixture, water ethanol. अच्छा water ethanol is example for positive deviation from ideal behavior. Positive deviation from ideal behavior. From ideal behavior. मतलब whenever positive deviation is a minimum boiling mixture. Positive. ये वाला. Positive deviation from Raoult's law. Positive whenever is ethanol water is less than that of both water and air. Minimum boiling isotropies are given, which are example for this one. Very simple funda. अच्छा galvanization is a technique है. Suppose when iron when exposed to air moisture it undergoes corrosion, rusting will take place. In order to prevent the corrosion, surface of the iron some more active metals are coated only. More active metal is zinc. That is zinc coating on iron only. 58. Silver coating iron is not possible. Silver is less reactive when compared to the iron. The same sample of carbon. अच्छा average atomic weight. अच्छा what is the formula for average atomic weight? Average atomic weight का formula. Average atomic weight is equal to when a percentage 98 into 12 देखो percentage 98 है 98 है whose atomic weight is 12 then 1.9 13 1.9 into 13 then 14 into 0.1 0.1 into 14 अच्छा which is divided by 100 अच्छा कैलकुलेट कर तो 12.02 इसका वैल्यू है 12.02 अच्छा फर्स्ट ऑप्शन 12.02 अच्छा देखो नंबर ऑफ POP bonds in P4O10 है P4O10 लिखो इसे ये वाला P4O10
अच्छा D2 बॉन्ड है, यहाँ D2 बॉन्ड है, यहाँ D2 बॉन्ड है, यहाँ D2 बॉन्ड, यहाँ D2 बॉन्ड। अच्छा POV bonds are they're asking 1 2 3 4 5 6। अच्छा P4 O10 P4 O6 whatever may be given है, number of POV bonds are only 4 only, sorry 6 only, there is no change है। Next, which are the following statement, in the following statement which are correct statements are? अच्छा H3BO3 used as antiseptic, correct only. In BDO6 each boron undergoes sp3, correct only. Aqueous solution of borax is alkene, yes, correct only, because aqueous solution of borax Na2B4O6 है. Aqueous solution is nothing but NaOH and H3BO3. अच्छा is nothing but a combination of weak acid versus a strong base. Whenever strong base alkaline nature only, means all statements are correct only. All given 3 statements are correct only. अच्छा 62 है, देखो डाइक्रोमेटान is formed at acidic medium में, it is just acidic medium में, chromate is in basic medium. For a kind of information, chromate is a yellow in color है, this is yellow in color है, this orange red color है, orange red color। अच्छा acidic medium means pH is अच्छा these two options are absolutely incorrect only, acidic medium pH is equal x is equal to 4 होना चाहिए, and basic medium means 8 होना चाहिए, the only one option है pH is equal to 4 correct, वो दो ऑप्शन में आए, but pH this basic medium मतलब pH is equal to 8 होना चाहिए। अच्छा no need to mug up the values। Which among the following is a carbonate ore of metal is? अच्छा calamine है, this is nothing but zinc carbonate है, this is nothing but zinc sulfide है, which are given NCERT textbook only। अच्छा cuprite is nothing but Cu2O। अच्छा bauxite, I think you know, you might know very well, Al2.H2O is a bauxite, bauxite, corundum, diaspor, ipsite, all these are examples। So the only carbonate what they are asking। अच्छा the number of geometrical isomers that can exist for square planar complex है। अच्छा for a kind of information, M A B C D को there are 3 geometrical isomers, direct question है। अच्छा इस वाले but M A B C D type है, M A B C D को you know how many geometrical isomers are? 3 geometrical isomers are possibility है। In the following, in complex compound, application of complex compound देख लीजिए। अच्छा this is incorrect ना, देखो this is incorrect ना सर। Millikan catalyst then which are used for hydrogenation of alkene, hydrogenation of alkene sir, but given anti this cancer है, treatment of cancer cisplatin is used है, which is incorrect है। Remaining all are correct only, which are given NCERT test. EDT is lead poisoning गाने, removal of hardness of water गाने, so everything is used EDT reactions only, which are incorrect statement है, they are asking। Incorrect is nothing but third option। देखो 65 का 65 का they are asking what are incorrect statements। incorrect statement only is, देखो only incorrect statement है, C only incorrect statement है। अच्छा only C is incorrect statement है, right? Now which of the following does not exist? अच्छा which of the following is not? IF7 only exists, this is not exist, IF7 only exists। इंटररिएक्शन कंपाउंड में IF7 because chlorine atom is not इतना large नहीं है when compared to associated with 7 chlorine atoms only, so ClF4 F7 is not possible है, the only IF7 is possible।
Does not exist is correct. Now, अच्छा, in case of SN1, अच्छा, for your kind of information, SN1 के लिए tertiary greater than secondary greater than primary. अच्छा, SN1 के लिए generally tertiary greater than secondary greater than primary. Of course, benzyl is greater than allyl, benzyl or allyl greater than this one. अच्छा, whenever aromatic, for example, after removal of Cl minus है, it becomes suppose plus होता है. ये ट्रोपोलियम कार्बोनेट is aromatic है. So सबसे most stable is 1 है. अच्छा, ये की ऑप्शन में है, odd man out है, very simple है. Because this is anti-aromatic होता है. This is aromatic होता है. After Cl minus is removed है. It is aromatic है. Of course, this is a conjugation है. अच्छा, there is no conjugation. अच्छा, सबसे least है 2 है and this is anti-aromatic है. 4n per electron, not 4n plus 2 electrons होते हैं, anti-aromatic है. सबसे most stable है, ये वाला 1 है. Least reactive is 2 है because anti-aromatic is unstable है. Less reactivity, unstable होता है. मतलब then 3 में aromatic है and 4 में conjugation है, 5 में there is no conjugation on that. It's very simple है. Identify the compound that exhibit tautomerism. अच्छा, tautomerism formaldehyde के लिए no tautomerism है. SD suppose formaldehyde में there is no alpha hydrogen. Condition है alpha hydrogen होना चाहिए, एसिडिक hydrogen होना चाहिए. अच्छा, pentanone is possibility देखो. पेंटानोन. अच्छा, पेंटानोन में देखो दिस हाइड्रोजन है 1 2 थर्ड एटम है, डबल बॉन्ड इज माइग्रेट हो रही है. अच्छा, shall we write like this? Keto tautomerism CH3 OH double bond CH CH2 CH. अच्छा, keto tautomerism is possible in case of first compound. अच्छा, इथेनॉल में not possible है because more electron withdrawing group होना चाहिए. But2 में not possible है. The only possibility is nothing but pentanone 2. Keto tautomerism. Next 69 है. अच्छा, 69 क्या हुआ यहाँ? C डबल बॉन्ड को CH2 हुआ. मतलब either Clemmensen reduction or Wolff-Christian reduction. अच्छा, Clemmensen reduction, Wolff-Christian reduction, ये वाला. देखो 69 होता है ये वाला करेक्ट ऑप्शन. सोडियम अल्यूमिनो lithium aluminum hydride sodium borohydride can reduce ketone into secondary alcohol, but alkane hai. The only one thing is this. In which of the following reaction benzene is obtained? अच्छा, ఇక్కడ benzene వస్తుందో లేదో చెక్ చేద్దాం. benzene వస్తుంది, సోడా లైమ్ కదా. अच्छा, ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ఏమవుతుంది? ఈ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ COON plus NaOH. अच्छा, ఏమవుతుంది? Na2CO3 బయటికి వెళ్ళిపోతుంది. ఇది ఫినోల్ వస్తుంది. But they ask the benzene only ना. This is incorrect one. 71 1 is incorrect है. 2 देखता है. अच्छा, ये ग्लिग्नॉल रिएजेंट है. C6H5MgBr हाइड्रोलाइसिस करेगा ना. देखो ये बेंजीन है, यहाँ बेंजीन मेजर कंपाउंड है. अच्छा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है. थर्ड ऑप्शन है डाउस प्रोसेस है. डाउस प्रोसेस में फिनोल है. अच्छा, फोर्थ ऑप्शन है whenever warming ना then phenol plus N2 plus H3. सेकंड ऑप्शन में बेंजीन है. रिमेनिंग 3 ऑप्शंस में फिनोल इज मेजर कंपाउंड होंगे. Ion which has the highest magnetic moment है. अच्छा, highest magnetic moment is more number of unpaired electron only. Since mu is equal to under root n into n plus 2 more magnetic.
N is the number of unpaired electrons only. अच्छा n value increases, magnetic moment increases only. Scandium में 21 है, scandium में 3p6 है, 4s0, 3d0. Actually 4s2 3d1 है, 3 electron removed है, n value 0 only. Nickel में 3d8 है, n is equal to 2 only. Zinc में 3d10 है, n is equal to 0 only. Titanium 23 है, 21 है, 23 है, 3p6 है, actually 3d1 होता है, n is equal to 1 होता है. अच्छा देखो ये वाला ISC max, the ion which has ISC magnetic moment is more number of unpaired electrons. Next 72. अच्छा the coordination number complex shows linkage isomerism means condition at least one ambidentate ligand होना चाहिए. अच्छा given option में only one option में ambidentate ligand है, bonding through nitrogen, bonding through oxygen. अच्छा NO2 will be written as this one, bonding through nitrogen है. अच्छा ON double bond, bonding through oxygen also. So whenever ambidentate ligand is there, there is a chance for exhibiting linkage isomerism. Then there are no other option है. Second option में, third option में, fourth option में there is no ambidentate ligand है, there is no linkage isomerism. अच्छा dehydrohalogenation, dehydrohalogenation is nothing but ये वाला. अच्छा you know F minus is poor living group है, I minus is good living group है. अच्छा good living group is nothing but I minus है, easily can remove I minus है when compared to F minus है. That's why you know whenever poor living group है we go for Hofmann elimination only. In case of fluorides है NH2 minus है we go for Hofmann elimination. Remaining case में go for Sagejev elimination also. So that means Ri is a more reactive than RBr, then RCl, then least reactive is RFO. Because poor living group. अच्छा ये तो Lucas reagent में tertiary alcohol give the turbidity immediately. Secondary alcohol within 5 minutes है. Primary alcohol should not give any PPT at room temperature. Means fastest is nothing but tertiary alcohol है, least is nothing but primary alcohol है. अच्छा ये tertiary alcohol है क्यों है? 74 का 1. No 75 है. Question number 75. अच्छा this is nothing but eta reaction है. अच्छा eta reaction में क्या होता है? बेंजोल्डिहाइड है. अच्छा ये क्या होता है? कैनिरोस रिएक्शन है. ये टू नेम्ड रिएक्शन है. कैनिरोस रिएक्शन है. कैनिरोस रिएक्शन वन मॉलिक्यूल अंडरगोस ऑक्सीडेशन, अदर मॉलिक्यूल अंडरगोस रिडक्शन. अच्छा एक मॉलिक्यूल अंडरगोस ऑक्सीडेशन, एक मॉलिक्यूल अंडरगोस रिडक्शन. देखो ये वाला ना एक मॉलिक्यूल रिडक्शन है, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडेशन. One molecule undergoes reduction, one molecule undergoes oxidation. Candidiasis reaction is very simple one. Just select the correct statement from the following. Select the correct statement from the following one. अच्छा alkyne hydration is correct only ना? Correct only. देखो acetylene है H2O in the presence of HgSO4, H2SO4. Am I right? अच्छा फर्स्ट विनाइल अल्कोहल है, अनस्टेबल है, कन्वर्टेड इनटू एस्टर है. राइट, वेरी इंपॉर्टेंट है अल्काइन में. हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन्स वेरी इंपॉर्टेंट है. कॉरस्पॉन्डिंग aldehydes ketones are formed. Alkenes hydrogenation gives alcohol, correct only, because CH3, CH double bond CH2, dil H2SO4, we get a secondary alcohol. Markovnikov rule you have to follow it. Anyhow, alcohols are formed. Cyanide hydrolysis gives the carboxylic acid. वो भी correct है. RCN complete hydrolysis है. RCOH plus ammonic acid is also correct. अच्छा partial में amide है, complete में carboxylic acid है. Isocyanase reduction I think previous exams में भी आया. On reduction gives water. Secondary में ये secondary ये वो वाला correct. Means all four statements are correct. All four statements are correct.
Next question number 77. Nitrobenzene on reduction with lithium aluminum hydride gives azobenzene. ये वाला 2 moles of nitrobenzene, lithium aluminum hydride, azobenzene आता है, ये वाला azobenzene. अच्छा ये काम you notice one thing है, in case of aliphatic amines है gives aniline only. For example, RNO2, lithium aluminum hydride, corresponding amines हो. Lithium aluminum hydride aliphatic amines gives amines है, aromatic amines gives azobenzene. Difference देखो lithium aluminum hydride का. Now purine base among the following is. अच्छा फर्क kind information I think you might know very well. A plus G is equal to T plus, ये क्या है? Number of purine base is equal to number of pyrimidine base in RNA. अच्छा आप याद करो, आपको एज खत्म होता है ना टीसी देता है, एज हो गया टीसी देता है, ऐसा याद करो. प्यूरिन बेस है, pyrimidine base है. अच्छा डीएनए में adenine and guanine is a purine base है. अच्छा adenine is not given, guanine is only purine base है. Remaining is pyrimidine bases है. Thymine and cytosine is example for pyrimidine bases. Of course, in RNA, uracil also example for pyrimidine bases. Next question number 79 है. Kf, Kb values are given है. They are asking freezing point of solution. Boiling point of solution is given. They are asking freezing point of solution कैसा? Question number 79. अच्छा delta TB is equal to I into M into K. अच्छा delta TF is equal to I into M into K. अच्छा similar same solution है. Solution of urea not solution is not changed है. Solution not changed means urea के लिए I is equal to 1 only. I1 only. Molarity also not changed है. Then delta TB by delta TF is equal to KB by KF. अच्छा delta TB is nothing but what? T minus T naught है. Delta TF is not nothing but what? T naught minus T है. अच्छा KB value and KF वाले. KB values are given I think. KB is 0.52. KF is nothing but 1.86. 1.86. अच्छा ये सॉल्यूशन का दिया ना, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट दिया 100.18. 100.18. माइनस 100 है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 है. अच्छा ये 0 है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 है. माइनस T इज इक्वल टू 0.52 by 1.86. अच्छा ये वैल्यू 0.18 है. 0.18 into 1.86 by 0.52 is equal to minus T. मतलब is equal to T. T is equal to minus होना चाहिए. ये कैलकुलेट करो. 0.65 approximately. Minus 0.654. Next question number 80. Antidepressant. अच्छा एनसीईआरटी में देखो ये वाला दिया. अच्छा अनदर नेम इज नाड्रिल. अच्छा क्लोरामफेनिकोल इज एंटीबायोटिक है. अच्छा these are all nothing but antibiotics only. Remaining two or three options are given antibiotics. अच्छा this is only nothing but antidepressants are given. Right? अच्छा ये फॉर्मूला भी ऐसा होता है.
నాడ్రిల్ అంటాం, యాంటీ డిప్రెసెంట్ డ్రగ్. नंबर ऑफ OH bonds in pyrophosphoric acid है. अच्छा, pyrophosphoric acid का फॉर्मूला H4P2O7. अच्छा, ये वाला कंपल्सरी है. अच्छा देखो 1 2 3 4. Sometimes questions are how many POP bonds are 1 POP bond, how many PP bonds are 0 PP bonds. Next, अच्छा 82 में this is another Kolb's reaction ना, named reaction only ना. देखो ये named reaction क्या है, Kolb's reaction. अच्छा, Kolb's reaction में end product क्या है, salicylic acid. सैलिसिलिक एसिड है, एंड प्रोडक्ट ए वाला होता है सैलिसिलिक एसिड. सैलिसिलिक एसिड. अच्छा, कंपाउंड ये क्या होता है, सोडियम फिनॉक्साइड है, एनहाइड्रस, राइट. देखो 83 है, C डबल बॉन्ड O को CH2 में कन्वर्ट करना by using this reagent. This reagent is nothing but Ulf-Kishner reduction only. This reagent nothing but Ulf-Kishner reduction only. In case of zinc amalgam, HCl-Clemmensen reduction only. 84. In which of the following case EMF of the galvanic cell is maximum? The SRP values of magnesium chlorine electrodes are given है. देखो ये एनोड कौन है, कैथोड कौन है. देखो ये एनोड होता है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट इज एनोड होता है, लेस रिएक्टिव इज कैथोड होता है. अच्छा, ई नॉट वैल्यू कितना होता है, ई नॉट इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड है, ई कैथोड माइनस ई एनोड है. 1.36 माइनस था माइनस प्लस है 2.37. अच्छा, 1.36 प्लस 2.37 3.73 होता है. But this is not asking the question only. They are asking the question EMF of the galvanic cell is maximum. देखो अच्छा, E naught value minus 0.059 by N log QC. गिवन इक्वेशन में QC कैसा होता है, देखो गिवन इक्वेशन में QC कैसा होता है, QC. अच्छा, क्या एनोड का रिएक्शन है, कैथोड का रिएक्शन है. एनोड का रिएक्शन लिखो, एनोड का रिएक्शन है Mg gives rise to Mg plus 2 इलेक्ट्रॉन. कैथोड का रिएक्शन है 2Cl minus gives rise to Cl2. -1 to 0 रिडक्शन, ऑक्सीडेशन. 1 सेकेंड, ये ऑक्सीडेशन है. देखो ये ऑक्सीडेशन है, एनोड है. रिडक्शन में कैथोड में रिडक्शन होना चाहिए, कैथोड में रिडक्शन होना चाहिए. रिडक्शन का मतलब Cl2 plus 2 इलेक्ट्रॉन gives rise to 2Cl. 2Cl minus होना चाहिए, ये है कैथोड. अच्छा, कंबाइंड इक्वेशन देखो Mg plus Cl2 Mg plus 2 Cl minus whole square, Cl minus whole square plus Cl minus, सॉरी ये वाला सर, प्लस 2Cl. अच्छा, QC क्या होता है, ये सॉलिड है. अच्छा, ये गैस है, तो एक 180 हम देख लीजिए. Mg plus 2 2Cl, हाँ सॉरी, Mg plus Cl minus whole square. ये वाला QC है, ये वाला QC है. नाउ
E is equal to E naught minus 0.059 by 2 log mg plus 2 and Cl minus whole square to the base 10. अच्छा ये वैल्यू ज्यादा है ना, this value is least value ना, E value is maximum only. मतलब आप देख लीजिए, if QC value is less then EMF is maximum. अच्छा if QC value is more high value, E naught minus high value is less value, then E cell is a minimum. Now you see the comparison है, you see the comparison है. फर्स्ट ऑप्शन में देखो, you see the comparison. फर्स्ट ऑप्शन में देखो कैसा होता है, ये फर्स्ट ऑप्शन देखो. अच्छा whenever writing the equation है, अच्छा ये 1 मोलर है, कोई प्रॉब्लम नहीं. 1 मोल में कोई प्रॉब्लम नहीं. ये 1 मोल है, E is equal to E naught होता है. केस 1 में E is equal to E naught होता है. देखो केस 1 में E is equal to E naught होता है. E is equal to E naught होता है केस 1 में. केस 2 में देखो, केस 2 में mg plus 2 and Cl minus है. अच्छा mg plus E is equal to E naught minus 0.059 by 2. अच्छा mg plus 2 का वैल्यू है 10 power minus 2 है, ये 10 power minus 2 है. अच्छा into 1 square is 1 only. माइनस प्लस हो गया, माइनस प्लस हो गया, 2 कैंसिल हो गया, प्लस हो गया, मतलब E naught प्लस 0.059 होता है. सेकंड ऑप्शन होता है E is equal to E naught प्लस 0.059 होता है. थर्ड ऑप्शन देखो, थर्ड ऑप्शन है, 1 सेकंड, ये वैल्यू 0.01, थर्ड ऑप्शन में E is equal to E naught minus 0.059 by 2 log of mg plus is 1 square है, ये 10 power minus 2 whole square, 10 power minus 4 है. 10 power minus 4 means अच्छा E naught plus 2 into 0.059. अच्छा थर्ड ऑप्शन होता है ये वाला, E is equal to E naught plus 2 into 0.059. अच्छा फोर्थ ऑप्शन देखो, फोर्थ ऑप्शन है E is equal to E naught minus 0.059 by 2 log, अच्छा बोथ आर 10 power minus 2 ना, 10 power minus 2 मतलब 10 power minus 2 whole square. अच्छा 10 power minus 6 होता ना, मतलब E naught plus 3 into 0.059 होता है. ये ऑप्शन होता है E is equal to E naught plus 3 into 0.09 होता है. अच्छा मैक्सिमम किसका, फोर्थ ऑप्शन का होता है. मैक्सिमम किसका होता है, फोर्थ ऑप्शन का होता है, 84 का. देखो अच्छा वन सेकेंड, पीछे क्या है, पीछे किट है. अच्छा what we did, you can check it. अच्छा E is equal to E naught, this is the formula. We calculate QC value. अच्छा QC value वाला दिस वाला, एक QC value है, ये वाला QC value है. Now QC value में फर्स्ट इक्वेशन में क्या होता है, 10 power minus 2 फर्स्ट इक्वेशन में. अच्छा बोथ आर 1 है, मतलब log 1 base 10 is equal to 0, E is equal to E naught होता है. सेकंड ऑप्शन में देखो, ये सब्स्टिट्यूट किया दर्शित है, we get maximum value. Now 85.
Which of the following set of quantum numbers is not possible है? Not possible है. अच्छा ये वाला first option is not possible है. L is equal to 0 means m is always 0 होना चाहिए. 1 is incorrect. Next. अच्छा NCERT टेक्स्ट बुक में भी दिया डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है when these are stationary है r power 3 है when in rotation है r power 6 है. Dipole dipole interaction energy in stationary polar molecule r power 3 है. In case of vibrating है r power 6 होता है. अच्छा now 87 देखो. अच्छा 87 का देखो. क्वेश्चन नंबर 87 है. क्वेश्चन नंबर 87 है देखो. दिस एसिडिक बफर ओनली ना. pH is equal to pKa. Logarithm of concentration of salt को NSVS है. एसिड को NaVA. pH is equal to pKa plus logarithm of NSVS by NaVA. अच्छा देखो pH is equal to pKa. pH is equal to pKa is given है. Whenever pH is equal to pKa value given है, which is equal to shall I go first? Question number 84 है. 87 है sorry. 87 है. pH is equal to pKa logarithm of NSVS by NaVA. Both are given equivalent. These are equivalent. Then 0 is equal to logarithm of NSVS by NaVA. मतलब 10 power 0 is equal to NSVS by NaVA. ये S stand for salt है, ये stand for acetone. मतलब NSVS is equal to NaVA. अच्छा salt के लिए कितना दिया? Salt के लिए अच्छा ना देखो this is not a buffer not given है. अच्छा देखो क्वेश्चन नंबर 87 है ऐसा देखो. क्वेश्चन नंबर 87. Acetic acid plus NaOH gives rise to sodium acetate plus H2. For a kind of formation, excess of weak acid and the base acting like a buffer. Acting like a buffer. अच्छा NaOH is given. The milli equivalence of NaOH is given. 500 into 0.1, 50 is given. A 50 is given. Because 500 into 0.1, which is equal to 50 is given. But इसमें double होना चाहिए. Then only we know pH is equal to pKa logarithm of concentration of salt by acid. As salt by acid is equal to 1, then pH is equal to pKa. If concentration of salt and acid is equal to 1, salt by acid is equal to 1, then pH is equal to pK. Given pH is equal to pKa. अच्छा salt and this is nothing but ये limiting reagent is NaOH होना चाहिए. अच्छा limiting reagent is अच्छा ये limiting reagent NaOH होना चाहिए. अच्छा limiting reagent is nothing but NaOH होना चाहिए. मतलब P50 होना चाहिए. 50 होना चाहिए. मतलब एक given है acetic acid 0.2 is given. अच्छा 0.2 is given है. 0.2 is equal to how much? We will give 100 ohm. He will give 100 only. अच्छा 500 कर दिया. 500 suppose 500 ml लिया. Then क्या होता है 100 ml. 100 मिली इक्वलेंस. 100 में 50 है. 50 अनरिएक्टेड होना चाहिए. अच्छा रिवर्स प्रॉब्लम है ये वाला. It is acting like a buffer. मतलब वॉल्यूम ऑफ एसिटिक एसिड कितना होना चाहिए? 500 ml होना चाहिए. आंसर शुड बी 500 ml. ये 500 ml होना चाहिए.
ये 500 ml होना चाहिए। अच्छा रिवर्स है, अच्छा दिस इज इक्वल टू 1 होना चाहिए, this should be equal to 1, then only pH is equal to pK। अच्छा this is equal to 1 होना चाहिए, then condition क्या है, NaOH is a limiting reagent होना चाहिए, then 50 milli equivalence of acetic acid है। अच्छा that means 50 is underacted होना चाहिए, when 50 is underacted है, if 100 moles are there then 50 underacted only, 50 reacted only, मतलब how much volume is supposed to be there, fine, this is a common sense question है। नेक्स्ट 88 है। अच्छा परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन है, अच्छा फॉर्मूला इज देयर ना, अच्छा फॉर्मूला इज देयर, परसेंटेज ऑफ, अच्छा परसेंटेज ऑफ Br इज 81 80 by 108। अच्छा AgBr का सॉरी, अच्छा फॉर्मूला मैं यहाँ लिखता हूँ, percentage of Br is equal to 80 by 188, because AgBr का मॉलिक्यूलर वेट है ये 108 है प्लस 80 है, अप्रोक्सीमेटली 188 into weight of AgBr formed upon weight of organic compound into 100, this is formula, weight of AgBr by weight of organic compound into 100। अच्छा 80 by 188 into the weight of AgBr formed is 0.188 divided by weight of organic compound 0.5 अच्छा देखो ये कैसा लिखूंगा, 188 into 10 power minus 3 लिखूंगा, 188 कैंसिल है। अच्छा देखो ये कैसे लिखूंगा, 5 into 10 power minus 1 लिखूंगा, 5 into 10 power minus 1 लिखूंगा। अच्छा 16 into 10 power minus 2, परसेंटेज मींस into 100 है, into 100 लिखो, मतलब अप्रोक्सीमेटली 60% है, अप्रोक्सीमेटली 60%, केवल 60%। नाउ क्वेश्चन नंबर 89 है, क्वेश्चन नंबर 89 है। क्वेश्चन नंबर 89 है, एलिमिनेशन रिएक्शन है, ये वाला दिया, देखो फर्स्ट स्टेप में प्रोटोनेशन है, सेकंड स्टेप में रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है, అంటే कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन इज अनस्टेबल है, कार्बोकैटायन इज अनस्टेबल है, secondary carbocation, अच्छा there is a chance for tertiary also because 1 to hydride shift है, 1 to H minus shift है, ये पॉजिटिव है, ये tertiary carbocation है। now elimination reaction देखो, this alpha position है, this beta, this beta, this beta, less number of beta hydrogen, you have to remove hydrogen। अच्छा देखो ये here 2 hydrogens, 3 hydrogens, यहाँ you have to remove from here you have to remove hydrogen only,
मतलब ये कंपाउंड ऐसा फॉर्म करेगा। अच्छा ये कंपाउंड मेजर कंपाउंड ये वाला, अच्छा ये वाला मेजर कंपाउंड, ये वाला मेजर कंपाउंड है, देखो ये वाला मेजर कंपाउंड होता है, राइट। राइट चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 90 में मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इन वेपर फेज। अच्छा वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला है, अच्छा YA चाहिए, YA इज इक्वल टू PA बाई PA प्लस PP, मतलब PA प्लस P टोटल होता है, यही फॉर्मूला मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में फॉर्मूला है वाला। नाउ देखो 5 मोल्स ऑफ A 10 मोल्स ऑफ B, अच्छा कैसे लिखूंगा, XA इंटू P नॉट A, अच्छा XA इंटू P नॉट A प्लस XB इंटू P नॉट B, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखूंगा। अच्छा मोल फ्रैक्शन हाउ मेनी मोल्स है, 5 मोल्स है, 5 बाई 15 है इंटू PA वैल्यू, PA वैल्यू इज 200 डिवाइड बाय 5 बाई 15 इंटू 200 है 10 बाई 15 इंटू, अच्छा P नॉट वैल्यू लिखना, P नॉट B वैल्यू इज गिवन है 100 है। अच्छा सिंपलीफाई करो, सिंपलीफाई करो, ये 1000 बाई 15 है, ये 1000 प्लस 1000 है 2000, 2000 बाई 15 है, ये 1000 है प्लस 1000 है 2000 बाई 15 है, 15 15 कैंसिल है, आई थिंक इट्स इक्वल टू 2। मोल फ्रैक्शन कंपोनेंट ये इन वेपर फेज ऑफ द सॉल्यूशन इज, अच्छा 1/2 ना, 5 इंटू 5 बाई 15 इंटू 200 है, अच्छा 5 बाई 15 इंटू 200 है, 10 बाई 15 इंटू 100 ओनली, अच्छा एलसीएम 1000 प्लस, देखो ऊपर वाला कितना होता है, ये 1000 है बाई 15 है, नीचे वाला 1000 है प्लस ये 1000 है बाई 15 है, अच्छा 15 15 कैंसिल है, 1000 बाई 15 डिवाइड बाई ये 2000 है, नथिंग बट 1/2, अच्छा 1/2 है ना, देखो 1/2 ये वाला 1/2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 है, क्वेश्चन नंबर 91 है, अच्छा आपको मालूम है क्वेश्चन नंबर 91 है, the time taken for T90% X అయితే T99 की 2x అని, T99.9 की 3x అని, 99.9 की 4x అని, they are asking the relation these two, nothing but 3:1, 99.9 की 90, very simple, simple formula। अच्छा लीचिंग टेक्निक है, लीचिंग ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर इज कैरिड आउट बाय NaCN और KCN, very simple है, NaCN और KCN। 93 है, and this process is Deccan's process है, preparation of chlorine है, this is nothing but Deccan's process, preparation of chlorine। Next question number 94 है, अच्छा नो डाउट दिस इज अ वीक फील्ड लिगेंड है,
weak field ligand है. Weak field ligand means sp3 hybridization only. अच्छा sp3 paramagnetic only because Ni+2 देखो Ni+2 electronic configuration है. Ni+2 means 3d8 4s0 4p0. No doubt sp3 hybridization only. Number of unpaired electrons 2. N is equal to 2. N is equal to is paramagnetic correct only. sp3 is incorrect है. sp3 hybridization. Square planar is incorrect है. अच्छा magnetic moment is this is also incorrect है because 2 into 2 plus 2 4 root 8 है. root 18 is incorrect. अच्छा correct is only first option 94. Fastest is nothing but we said na tertiary greater than secondary greater than primary. अच्छा ये वाला tertiary, ये secondary है, ये tertiary है, ये primary. अच्छा देखो विनाइल में डबल बॉन्ड में एंड फिनाइल में कार्बोकैटायन इज अनस्टेबल. ये वाला सब ये बाहर गया, Cl- बाहर गया, Cl- बाहर गया, ये वाला आता है. ये सबसे अनस्टेबल सबसे अनस्टेबल है. लीस्ट सपोज लीस्ट आस्क फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट. हाईएस्ट इज आस्क फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट. अच्छा क्वेश्चन नंबर 96 एनसीईआरटी में है. फिनोल का ये वाला पैराबेंजोक्विनोन आता है. डायरेक्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का. फिनोल ऑन ऑक्सीडेशन विद K2Cr2O7 सोडियम डाइक्रोमेट है, प्रोडक्ट विद पैराबेंजोक्विनोन होता है. डायरेक्ट क्वेश्चन. अच्छा for a kind of formation previous class which of the following molecule not undergoes FC reaction है. अच्छा ये वाला है क्योंकि FC reaction में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स यूज करता है. इस इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, देन इमीडिएटली ये वाला नाइट्रोजन बिकम्स क्या होता है, नाइट्रोजन बिकम्स ऐसा होता है N plus NH2 plus something suppose AlCl4 etc माइनस ऐसा होता है कंपाउंड. ये whenever पॉजिटिव होता ना deactivate होता है. whenever deactivate means there is no FC reactions only. अच्छा all minus M groups are there is no FC but plus M group में exception है aniline having no FC reactions only. अच्छा डेटॉल में क्या होता है, प्रीवियसली आस्क्ड का क्वेश्चन है. क्लोरोजेलिनोल and terpenol is containing this one. Yes, alpha D glucose, beta D glucose anomers है. राइट क्वेश्चन है. अच्छा C2 कॉन्फिगरेशन में C3 C4 में डिफरेंस दैट इज कॉल्ड एपिमर्स है. C1 कॉन्फिगरेशन में डिफरेंस कॉल्ड एनोमर्स ओनली. अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज C1 कॉन्फिगरेशन में डिफर है. अच्छा देखो एनर्जी का फॉर्मूला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू N स्क्वायर. अच्छा सपोज रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ हीलियम टू हाइड्रोजन. अच्छा Z स्क्वायर हीलियम बाय बिकॉज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Z स्क्वायर हाइड्रोजन बट N स्क्वायर हाइड्रोजन अपॉन N स्क्वायर हीलियम प्लस. अच्छा Z square is nothing but atomic number is nothing but atomic number of helium 2 na 2 square is 4, hydrogen is 1. Now he becomes second orbiter, hydrogen second orbiter. Second orbiter 2 square is 4. Helium is fourth orbiter, 4 square is 16. मतलब 1:1 right. चलो देखो. Now this paper also seems very easy. All questions are 50 questions are from NCERT only. अच्छा tricky and very simple question था. So you have to practice more number of grand test papers so that your speed and accuracy will increase in final examination. Thank you very much.